Hey, hi, this is Gautam, and behind me is my daughter Gayatri, who wants to be in this video. She just won't leave. So, mutual fund industry is a growing industry in India. Okay, so the assets managed by the mutual funds in India is around 20% of India ka GDP. Okay, and in the developed world, like in the US, okay, the mutual fund penetration is more than 100% of the GDP. All right. Okay, and in the developing world like South Africa and Brazil, it's 50-60% the mutual fund penetration. Okay, so this is of course is a growing market in India. Okay, it's a very competitive market as well. More than 40 mutual fund houses are there now in India. Okay, so if you want to understand key how to do fundamental analysis of an asset management company like HDFC, AMC, Aditya Birla, Sun Life, etc., so on and so forth. Okay, then please check out, watch the complete video. Okay, you'll understand key what are some of the important things you should look for when analyzing a uh, asset management company for investments. All right, thank you. So now let's try to understand key how you can go about doing fundamental analysis of asset management companies. That is mutual fund companies. All right. So in order for us to understand fundamental analysis of such companies, we first need to understand key unka business model kya hai. What is the business model? How do AMCs or mutual fund companies, how do they make money? So first, let's quickly understand that. And then we'll jump into key fundamental analysis. आप कैसे कर सकते हैं? Okay. So let me go ahead and share my screen. All right, so let's understand how do AMCs or mutual funds they make money. So I have this snippet pulled from AMC ka website. Okay, so what it says is the mutual funds are permitted to charge certain operating expense for managing mutual fund schemes. That's what it says. Okay, so see mutual funds when they manage their money, na, they incur some expenses like sales and marketing, advertising. They have to pay themselves. They have to pay the fund managers, etc., etc. Okay, so उसका जो खर्चा होता है, okay, so that kharcha they charge in the form of a fee, okay, to the mutual fund investor, okay, and that is a percentage of the fund's daily net assets. तो अभी समझते हैं इसका मतलब क्या है. So this cost, okay, this kharcha, this cost that I spoke about for running and managing a mutual fund scheme is called TER, total expense ratio. Okay, in other words, it's also called yield. Okay, तो एक एग्जांपल से समझते हैं. Okay, so let's say you put in year one, you put 5,000 rupees. Okay, in HDFC AMC का कोई scheme, you put 5,000. Okay, आपने 5,000 रुपए डाले. I'm just making sure I'm getting recorded, right? Yes, I am. Okay, तो क्या है? So let's say the TER, total expense ratio or the yield, okay, is 1%. मतलब you put 5,000, okay, and the mutual fund house or HDFC AMC in this case will make 1%. तो 1% of 5,000 कितना हो गया? 50. So HDFC AMC will make 50 rupees in 1 year from the 5,000 that you invested in year one. Okay. And let's say you stop putting any fresh investments into the mutual fund. You put in 5,000 and you do not redeem, you just stop investing. आपने 5,000 डाले, उसके बाद you just pause investing any more money. Okay. So what happens is in year two, okay, this 5,000, okay, it grows to 5,500. It grows by 10%. So if let's say if this is an equity asset under management, equity AUM, okay, तो इसमें there is a तो equity तो अपने आप naturally grow करता रहता है, right? Okay, तो it grows let's say by 10%, grows to 5,500. Then again, because you have not redeemed your 5,000 or whatever the amount, so again next year also, assuming TER again is 1%, तो HDFC AMC will make 55 rupees. मतलब आपने पैसे एडिशनल नहीं डाले, आपके the same 5,000 that you had invested, okay, it has become 5,500, but HDFC AMC earned 50 rupees in year one, 55 rupees in year two. Let's say year three, again, you do not put any fresh investments. Okay. So let's assume key this 5,500 grows by 10% again. So this becomes 6,050. Okay. Assume ki TR again is 1%. Okay. So HDFC AMC will make 60.5 rupees as the fee, okay, for managing your पैसा for the initial money that you had put in. Okay. तो आपका 5,000 grow कर गया इतने में. HDFC AMC, okay, they made 50, 55 and 60.5 rupees.
ओके, मतलब आपने कोई पैसा नहीं डाला तब भी उन्होंने हर साल वो पैसा कमाते रहेंगे। ओके, ऑलराइट। तो दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स दे मेक मनी। ओके, all right. So moving on, let's just try to understand a few more things before we learn key how to do fundamental analysis. Key again, I've pulled some snippet from AMFI ka website. AMFI, by the way, stands for Association of Mutual Funds of India. I should have told that ahead of time. Any which ways, so SEBI ने क्या किया है? It has prescribed certain TER for both equity and debt funds. In fact, सारे asset classes के लिए SEBI has prescribed कि आप कितना TER चार्ज कर सकते हो. ओके, कितना टीआर म्यूचुअल फंड चार्ज कर सकते हैं। ओके, एंड दे फॉलो समथिंग विच इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक प्राइसिंग। टेलीस्कोपिक प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ? व्हाट इट मींस इज कि as the size of the mutual fund scheme it increases, okay, all right, then uh, then क्या होता है कि the TRs that the mutual fund houses, mutual fund companies can charge, that reduces as well. Okay, because रीजन क्या है कि सेबी अंडरस्टैंड्स कि जैसे जैसे फंड का साइज ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड हाउसेस वुड नॉट, लेट्स से, इनकर एक्सपेंसेस, खर्चा पानी, इन द सेम प्रपोर्शन, okay, as the as the growth in the size of the fund. Okay, all right. मान लो if they are managing 20,000 CR का फंड या they are managing like 1,000 CR का फंड, okay, जब द खर्चा पानी, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज 1,000 CR या 20,000 CR, द खर्चा पानी, द कॉस्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज बोथ दीज फंड्स इज मोर और लेस द सेम। ओके, तो आपको ऐसा थोड़ी है कि एडिशनल बहुत सारे, यू वुड नॉट हैव टू, लेट्स से फर्स्ट यू स्टार्टेड द म्यूचुअल फंड स्टार्टेड मैनेजिंग अ फंड ऑफ 1,000 CR, ओके, दे एम्प्लॉयड, लेट्स से, 2 fund managers, some staff, some computers they got, okay, the fund grows from 1,000 to, let's say, 2,000, 20,000, okay, so there would be hardly any increase in expense that the mutual fund will incur in managing the 20,000 CR का फंड। ये तो सेबी अंडरस्टैंड्स दैट, दैट्स व्हाई सेबी कहता है अगर फंड का साइज बड़ा हो रहा है तो यू कैनॉट चार्ज द सेम टीआर, द टीआर फीस ऑल्सो शुड गो डाउन। ठीक है, सो दैट्स समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। And another important thing to understand in this business is because of course government of India SEBI they want financial inclusion in the country. Okay, so what they have said is hey, if these mutual fund houses, they, let's say, penetrate in tier 2 and tier 3 cities, okay, then they are allowed to charge a higher TER, higher fee. ओके, ऑलराइट, क्योंकि उनको पता है कि अगर हिंटरलैंड स्मॉल टाउन्स में जाएंगे तो देयर विल बी फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो उसको टू कॉम्पेंसेट these AMC companies to penetrate in tier 2, tier 3, tier 4 cities, okay, SEBI has allowed them to charge a higher fee. Okay, so that's why all these mutual fund houses you would see, they're trying to penetrate the hinterlands of the country. Okay, so this is something which is important to understand. Now let's again move forward. So one more fact which I love about this business, okay, and that of course you have to check when you are doing fundamental analysis. Fundamental analysis की हम बात करेंगे अभी in just a couple of minutes from now, okay. But one thing which is very important, as I said, which I love about this business is this business has very high operating leverage. Okay, जैसे we were talking about in the last slide कि regardless of a mutual fund managing 1,000 CR का fund या 20,000 CR या 50,000 CR का fund, the cost that they incur in managing these funds of different sizes is more or less the same. Okay, so these businesses now, as they scale, okay, their costs, they do not increase in proportion of their growth. कॉस्ट मोर और लेस फिक्स रहते हैं इनके। फिक्स कॉस्ट भी क्या होते हैं? मेन फिक्स कॉस्ट इज एम्प्लॉय एक्सपेंस। ओके, कोई एज सच कोई बिल्डिंग ऐसा वगैरह तो इतना खरीद इनको इन्वेस्ट नहीं करना होता, बहुत ज्यादा नहीं करना होता। मेन एक्सपेंसेस, देयर मेजर एक्सपेंसेस इज एम्प्लॉय एक्सपेंस एंड फंड मैनेजर फी। Okay, so these fees more or less remain constant. Okay, so as the AUM size increases, तो जो भी growth additional revenue आता है, that flows directly to the bottom line because expenses are not increasing in proportion with the growth. Okay, so operating leverage plays out beautifully in this industry. So of course you got to pick a mutual fund in which you see, again talking about fundamental analysis अभी हम डिस्कस करेंगे, तो you got to pick mutual fund companies in which you have seen a margin expansion over time. So this is one aspect which you got to check when you are analyzing a mutual fund company. Okay, let's move forward.
All right, one last thing in the business model before we jump to finance fundamental analysis, कैसे करना है कि सी सेबी ने क्या किया है कि इट हैज प्रिस्क्राइब्ड डिफरेंट सेट ऑफ टीआर फॉर डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो इक्विटी इज जो एसेट क्लास होता है, इक्विटी इज अलाउड टू चार्ज अ हायर टीआर, डेट उससे थोड़ा लोअर, लिक्विड एसेट क्लास होता है वो उससे थोड़ा लोअर, एंड देन जो आपका ईटीएफ जो होता है दैट्स द लोएस्ट, दैट चार्जेस द लोएस्ट टीआर। ओके, तो तो क्या है कि एंड व्हाई ईटीएफ चार्जेस द लोएस्ट टीआर, बिकॉज ईटीएफ इज मोर लाइक अ पैसिव इन्वेस्टमेंट, राइट? तो उसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर तो चाहिए नहीं होता टू काइंड ऑफ सेलेक्ट स्टॉक्स, ये वो। तो इट्स लाइक तो ईटीएफ है वो तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो यू जस्ट पुट एन एल्गोरिथम और वो अपने आप एलोकेशन करेगा। तो सेबी बोलता है कि भाई पैसिव के लिए फंड मैनेज म्यूचुअल फंड हाउसेस, एएमसी, एचडीएफसी एएमसी या कोई भी एएमसी है, दे कैन नॉट, दे नीड टू चार्ज वेरी लो टीआर। ओके, तो लार्जर पॉइंट इज सबसे जो प्रॉफिटेबल asset class for AMCs is equity. Okay, so in equity, mutual funds, they are allowed to charge the highest TER. Okay, that's the biggest takeaway. Okay, now let's understand ki aap, how you can go about doing fundamental analysis for AMC companies. All right. अगर आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया ना AMCs का, then fundamental analysis of AMC companies, mutual fund companies is very simple. It's pretty straightforward actually. बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ओके, सो पहली चीज क्या करनी है आपको, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सिंपल रखते हैं। ओके, ग्रोथ में ग्रोथ में ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट अ सेंस ऑफ कि मार्केट साइज अभी करंट क्या है, और ऑल्सो अनुमान लगाना पड़ेगा, यू गॉट टू एस्टिमेट कि फ्यूचर में मार्केट कितना बड़ा बन सकता है। ओके, और जो इसमें जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट होता है, दैट इज टाइड टू द नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स and the natural compounding in equities. Okay, so what I mean is, if you look at this table here, ये वाली, okay, so you would see, अगर हम सिर्फ equity AUM की बात करें, okay, so equity AUM is growing 20% every year, 20% ग्रोथ दिखा रहा है एवरी ईयर। okay, तो वाई इतना ग्रोथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरी ईयर यू हैव न्यू यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स एंटरिंग द मार्केट। तो राइट नाउ इंडिया में करीब 5.4 सीआर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं यूनिक। 2 साल पहले इट वॉज 3.7 सीआर। इनफैक्ट एक साल में, पिछले एक साल में इंडिया में वी हैव एडेड 1 सीआर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, okay, which is pretty huge. So you have like new people coming up, entering the market, and they're putting money in mutual funds, which is leading to mutual fund growth. Not only that, a lot of mutual fund investors are also kind of increasing their ticket sizes of their investments. तो ये ग्रोथ, 2 ग्रोथ ड्राइवर हो गए। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर क्या हो गया? एज आई सेड, नेचुरल कंपाउंडिंग इन इक्विटीज। ओके, तो अभी हमने जब बिजनेस मॉडल समझा था कि हाउ म्यूचुअल फंड्स, हाउ एएमसीज दे मेक मनी, तो वी सॉ, हमने अज्यूम किया था कि 10% इक्विटी में ग्रोथ है एवरी ईयर। सो देयर इज नेचुरल कंपाउंडिंग ऑफ इक्विटीज, राइट? सेंसेक्स या निफ्टी हर साल ग्रो करता रहता है, राइट? नेचुरली, सो देयर इज नेचुरल कंपाउंडिंग इन इक्विटीज। तो दीज 3 आर द वैल्यू ड्राइवर्स, ग्रोथ ड्राइवर्स, okay, जिससे टैम जो है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इक्विटी AUM, एंड विद इन दैट इक्विटी AUM जो होता है, दैट उसका साइज इज ग्रोइंग लाइक क्रेजी। Okay, and it's expected to continue doing that given the massive under penetration in India. तो आप खुद भी चाहो तो अनुमान लगा सकते हो कि फ्यूचर में कितना बड़ा मार्केट बन जाएगा। राइट, ओके, और इनफैक्ट मैंने लिंक्डइन पोस्ट डिटेल में डाला है, प्लस आई ऑल्सो कवर दिस इन माय इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट प्रोग्राम एज वेल। Okay, so in which I teach how you can estimate the future size of this company or any other industry. Okay, so probably I'll just post the link of the LinkedIn post, and yeah, I'll also put in details about the cohort program, equity research cohort program as well, if in case you want to join. Anyways, let's move forward. Okay, then that is TAM is one thing. TAM is one thing. Next is कि आपका मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर कितना है डिफरेंट एएमसी कंपनीज का। तो यहां पे अगर देखो इस टेबल में, एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर इन इक्विटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इक्विटी बिकॉज सी, देखो इक्विटी, एज आई सेड, इक्विटी होता है आपका, आपका डेट होता है, यू हैव लिक्विड AUM, एंड यू हैव ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड के, और एक आधा और भी होते हैं। okay? तो ये सारे एसेट क्लासेस होते हैं। okay? As I said, equity is the most profitable asset class for AMCs. Okay, so I'm focusing more on equity. That is what I like to track. Okay, इनफैक्ट अभी आप सिग्निफिकेंस भी देखोगे इसका। okay? तो इक्विटी मार्केट शेयर की अगर हम बात करें, तो एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर इन इक्विटी AMC is 12.7%। इनका और आई थिंक द हाईएस्ट मार्केट शेयर इज फॉर SBI, if I'm not wrong, SBI, then ICICI Prudential, both of them are not publicly listed. HDFC AMC, if I remember correctly, is the third largest mutual fund company in India.
एनी विच वेज एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर 12.7%, और बाकी सारी कंपनीज का भी मार्केट शेयर मैंने यहाँ मेंशन किया है, okay, जो पब्लिकली लिस्टेड है। okay? सो इफ यू सी, एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर इज लार्जली कांस्टेंट, बाकी एएमसीज का इज फॉलिंग। फॉल इसलिए हो रहा है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस स्पेस नाउ। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन दिस स्पेस, सो बाकी का थोड़ा थोड़ा फॉल हो रहा है। इनफैक्ट एचडीएफसी एएमसी का भी कुछ टाइम पहले, FY23 के पहले फॉल हो रहा था, अब नाउ काफी कांस्टेंट हो गया है। okay? तो अगर इवन कांस्टेंट है या थोड़ा फॉल कर रहा है ना, तो भी एब्सोल्यूट बेसिस में इन कंपनीज का एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ग्रो कर जाता है। ओके, बिकॉज इतना ग्रोथ है इस इंडस्ट्री में, तो अगर मार्केट शेयर कांस्टेंट है या थोड़ा सा डिक्लाइन भी कर रहा है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, तो भी कंपनी है, जो जो म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी है, वो ग्रो करती है अच्छे से। ओके, सो इट्स समथिंग दैट यू गॉट टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, सो मार्केट शेयर आपको देखना है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यील्ड देखनी है, कि यील्ड या टीआर कितना कमा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाट आई हैव डन इज आई हैव लिस्टेड डाउन दी एचडीएफसी एएमसी के टीआरस या इक्विटी यील्ड्स। ओके, तो अगर आप देखो कि ये जो इक्विटी यील्ड्स है ना, दे आर इन कांस्टेंट प्रेशर। इनफैक्ट दैट इज वन ऑफ द की रिस्क्स प्लेइंग आउट इन दिस इंडस्ट्री, कि देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन द इक्विटी यील्ड्स। इक्विटी यील्ड्स आर गोइंग डाउन ओवर टाइम। अभी हम डिस्कस करेंगे इन 2 मिनट्स की व्हाई दे आर गोइंग डाउन ओवर टाइम, लेकिन अगर आप देखो कि इक्विटी यील्ड्स फॉल कर रहे हैं। ओके, ऑलराइट, और तो आपको ऑफ कोर्स यील्ड चेक करना है। ओके, फिर नेक्स्ट चीज क्या आपको देखना है, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में आपको एबिटा एबिटा या पैट कुछ भी देख लो। ओके, आप एबिटा देख लो कितना हाई है, सो हाई इन दिस इंडस्ट्री। और अगर आप एचडीएफसी एमसी का देखो, एबिटा इज ऑन द इंक्रीजिंग ट्रेंड, 78, 80, 83। ओके, बाकी सब कंपनीज का भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा थोड़ा सा गिरा भी है। एचडीएफसी एमसी का हैंडसमली ग्रो कर रहा है। okay? क्यों? इट्स showing operating leverage for the same reason that we discussed in the last slide, कि operating leverage is a beautiful characteristic which plays out in this industry, and HDFC AMC seems to be demonstrating a lot of good operating leverage. Okay, बाकी इंडस्ट्रीज भी, डिस्प्ले कंपनीज भी इन दिस इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग लेवरेज दिखा रहे हैं, बट एचडीएफसी एमसी सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। ऑलराइट, तो ये तो एक चीज हो गई। ठीक है, अगर हम इनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स की बात करें, इसमें बस सिंपल पीई देख लो, कुछ पीबी ईबी का झमेला नहीं पालना, सिर्फ पीई देख लो, सिंपल सा। ओके, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, बहुत सिंपल इंडस्ट्री है। अगर आपने बिजनेस मॉडल समझ लिया, तो केवल 4-5 चीजें ही होती हैं जो आपको ट्रैक करनी है फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। ओके, एंड अगेन मैं थोड़ा सा यू नो ऑफ कोर्स आपको और चीजें भी ट्रैक करनी चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यू नो फॉर अ डिसेंट इनफ फंडामेंटल एनालिसिस आप ये सब 4-5 चीजें ट्रैक कर लो, तो यू वुड बी गुड। ओके, तो एचडीएफसी एएमसी का मल्टीपल हाईएस्ट है। ओके, हाईएस्ट क्यों है? ऑफ कोर्स इनका मार्जिन सब, बिकॉज दे ऑफ कोर्स हैव द हाईएस्ट मार्जिन। प्लस प्लीज लुक एट दिस कॉलम हियर। ओके, एनालिस्ट्स, इक्विटी एनालिस्ट जो होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ओके, दिस इज सम की मेट्रिक दैट दे ट्रैक, कि व्हाट पोर्शन ऑफ द टोटल एयूएम, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, ओके, अंडर एन एएमसी is equity. I'll repeat, what portion of the total AUM managed by an AMC is equity. तो HDFC AMC का 64% AUM is equity. Or equity, as I said, is the most profitable, highest revenue generating, highest yield asset class for an AMC. Okay, तो सबसे हाईएस्ट इनका इक्विटी एयूएम है, इसलिए दे हैव हायर एबिटा एंड दे एंजॉय अ हाईएस्ट मल्टीपल। अगर आप यूटीआई एएमसी को देखो, इनका लोएस्ट इक्विटी एयूएम है, बिकॉज यूटीआई एएमसी लार्जली पैसिव में है, ईटीएफ में है। ओके, पैसिव में दे यू हार्डली मेक एनी मनी, यू मेक मनी ऑन इक्विटी। ओके, तो इक्विटी इनका लो है, एयूएम, दैट्स व्हाई इनका इट रिफ्लेक्ट्स इन देयर मल्टीपल एज वेल। ओके, सो डोंट थिंक कि यूटीआई कल को या एक साल बाद एचडीएफसी एएमसी के मल्टीपल पे ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं होगा इतनी जल्दी, या शायद ना हो, क्योंकि इनका इक्विटी कॉम्पोजिशन ही इतना लो है। ऑलराइट, सो प्लीज, ओके, यू कीप दैट इन माइंड, कि मार्केट बहुत इंटेलिजेंट है, मार्केट इज असाइनिंग अ सर्टेन मल्टीपल फॉर सर्टेन रीजन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। लास्ट इज आपको और क्या चेक करना है, जैसे मैं बोल रहा था, यू गॉट टू चेक इक्विटी यील्ड प्रेशर। ओके, ये जो इक्विटी यील्ड्स जो नीचे जा रहे हैं ओवर टाइम, ओके, ये क्यों जा रहे हैं नीचे ओवर टाइम? ओके, सी, पहला क्या है, पहला रीजन आप प्लीज यहां पढ़ो। ओके, यू कैन पॉज दिस वीडियो टू काइंड ऑफ रीड व्हाट आई हैव हियर, कि फ्रेश फ्लोज into existing funds are coming at a lower margin. Okay, moreover, new fund offerings have intense pricing pressure distributed. So क्या हो रहा है कि बहुत कंपटीशन आ गया, there is a lot of competition has come up
जब भी बहुत हाई प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होती है ना, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी वाली इंडस्ट्री होती है, हर हाई आरओआईसी वाली इंडस्ट्री होती है, कंपटीशन मक्खियों की तरह आ जाता है। तो कंपटीशन बहुत आ गया है। ओके, तो क्या हो गया, कंपटीशन ने क्या किया है, दे कम अप विद न्यू फंड ऑफरिंग्स टाइम एंड अगेन। ओके, एंड दे चार्ज वेरी लाइक पीनट साइज यील्ड। ओके, तो क्या है कि कस्टमर्स बोलता है कि यार ये इतना कम यील्ड चार्ज कर रहा है, इतना कम टीआर चार्ज कर रहा है, चलो इसके पास चले जाओ। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स कंपटीशन की वजह से यील्ड कम हो रही है। द अदर रीजन इज, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, कि ग्रॉस फ्लोज इन द इंडस्ट्री आर सब्सटैंशियल। तो जो नए फ्रेश फ्लोज आ रहे हैं, दे आर कमिंग एट अ लोअर मार्जिन, दे आर कमिंग एट अ लोअर मार्जिन। ओके, तो जो पुराना जो इक्विटी है, ओके, जो पुराना जो इक्विटी एयूएम है वो तो हायर मार्जिन पे है, जो नया आ रहा है वो लोअर मार्जिन पे आ रहा है। सो इट्स दे आर ड्रैगिंग द ओवरऑल यील्ड व्हेन दे बिकम अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ओवरऑल एयूएम। ओके, पुराना एयूएम इज एट अ हाई यील्ड, नया जो फ्रेश फ्लोज आ रहे हैं इट्स कमिंग एट अ लोअर मार्जिन, सो ओवरऑल जो यील्ड आ रहा है, दैट उसका यील्ड वेटेड एवरेज कम होता जा रहा है। ओके, सो दैट्स द रीजन। ओके, एंड ऑफ कोर्स द अदर रीजन इज, द अदर रिस्क और जो विच इज प्लेइंग आउट, इसकी ऑफ कोर्स ये इंडस्ट्री लेवल एक ट्रेंड है, कि एज आई सेड कि देयर इज नाउ लॉट ऑफ फोकस ऑन पैसिव इन्वेस्टमेंट्स vis-a-vis एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स। ओके, तो यूटीआई में एज आई सेड देयर इज अ हेवी लार्जर पोर्शन ऑफ पैसिव एयूएम। ओके, पैसिव एयूएम में यू हार्डली मेक मनी। ऑलराइट, तो ये सब चीजें हैं मोटी मोटी जो आपको ये इंडस्ट्री में, इन कंपनीज में ट्रैक करनी है। ओके, और उससे आप एक डिसेंट फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। ऑलराइट, ओके, तो yeah, hope this was helpful. All right, and as I said, I'm happy to I'll put my LinkedIn post wherein मैंने समझाया है कि कैसे आप ये मार्केट को साइज कर सकते हो फ्यूचर के लिए। ओके, और ये इंडस्ट्री अभी ट्रस्ट मी इंडिया में बहुत छोटी है, डेवलप्ड मार्केट्स में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडिया में आई थिंक लेस देन 20% ऑफ जीडीपी, जो जो एमएफ टोटल एमएफ एयूएम है, म्यूचुअल फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट है, इट्स ओनली 20% ऑफ जीडीपी। डेवलप्ड वर्ल्ड में आई थिंक 100% ऑफ जीडीपी से भी ज्यादा है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका, ब्राजील में भी 50-60% ऑफ जीडीपी है, इंडिया में सिर्फ 20% ऑफ जीडीपी पेनिट्रेशन है। तो ये मार्केट हैज अ लॉट ऑफ लेग्स टू ग्रो इन द फ्यूचर। ओके, तो एंड एज आई सेड, आई कवर दिस इन माय इक्विटी रिसर्च कोहॉर्ट प्रोग्राम एज वेल। ओके, एक्सटेंसिवली, कि कैसे आप एनालाइज करके इसे वैल्यू कर सकते हो। एनी विच वेज, सो होप यू learned how to do fundamental analysis of AMC companies. All right. Thank you. All right. So this concludes my masterclass on how to do fundamental analysis of financial services, particularly general insurance, banks, NBFCs and asset management companies. So हमने पहले इनका business model समझा, and then हमने देखा कि how you can go about doing fundamental analysis of all these companies. All right. So रात के 2 बजे हैं यहाँ पे. So I put in a lot of effort in making this content, which in my view I try to keep it as high quality as possible. Okay. Yeah, so really appreciate you liking and endorsing my content and sharing it with people you think may benefit. Okay, just would encourage me to, just keep on working harder. Okay, and put the same kind of content in the future as well. All right. Yeah. All right. So thank you. All right. Hope you are finding my content valuable. If you are an investor interested in learning thorough fundamental analysis and valuation, or if you're an aspiring equity research analyst, okay, who is interested in learning these skills to get into such roles, then I have a program suited to your needs. Okay, and so in my program, I cover quality and well researched content. Okay? I cover diverse industries. Okay, and the topics that I teach in this program through live exercise and case studies are financial statements. I also teach you how to analyze and interpret financial and operating ratios. It's pretty extensive. Okay. And how to assess the forensics and how to analyze the quality of the management, how to read con calls and annual reports, okay? How to analyze an industry and how to size the market. Okay. Uh, how to assess moats in a business, financial modeling, and valuation. And I also help you to form and articulate your investment thesis. So if you're someone who thinks who will be benefited by this program, then feel free to reach out to me at my email or reach out to me on LinkedIn. All right. Thank you.